Welcome guys, welcome to another episode of Options की बात ICICI Direct के साथ. As usual, we have Dinesh sir with us. How are you, Dinesh sir? Good morning. Good morning, Gaurav. Good morning, viewers. It's raining like anything here since last night. Heavy rains in Kolkata. एकदम चल रहा है. We're talking about heavy rains. Even Mumbai from past 2 days is seeing heavy rains. Yeah, I think both the east and west shores of like yeah, east ends of India seeing the retreating monsoons as usual. Okay, sir, we'll take the last week we could not have because of the internet issues and all those yeah, stuff. yeah. But we had 19,500 triangle that you we spoke about, and I think it was perfect because Nifty made a high, low of 19,498, but 500 के ऊपर क्लोज Almost हुआ. towards the या end. हाँ, वो एकदम. ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड था वो तो. हाँ, उसमें वो 500 के पुट को कुछ हुआ भी नहीं होगा. सो right. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी देयर वाज एनी Yeah, इशू देयर. yeah, Talking about this week, this that Thursday was one of the worst bearish engulfing candle that we have. yeah, But Friday, yesterday, we had a green candle, small green body, so sort of a bullish harami being seen yes, there. yeah, So, and there's a lot of panic which is going on WhatsApp group. People are saying कि US shutdown हो जाएगा, 3 दिन बचा है, blah blah blah. All those bad news are floating. So yeah, let us clear the air and let's tell uh, people that do not believe on WhatsApp stories because Dow yeah, also was down 100 points and we people are panicking unnecessarily there. yeah. So let's So, go ahead with yeah. Nifty. तो Yeah. फर्स्ट कंटिन्यू विद द यूएस स्टोरी है. उनका हर क्वार्टर में आप सुनोगे, हर हाफ ईयरली में वो ब्लैकमेलिंग होता है बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टी, सेनेट एंड कांग्रेस का, कि ये वो हैन तेन एंड में होता है. बट नहीं भी होता तो सी मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग इन एडवांस. जो यूएस मार्केट में भी जो करेक्शन आया है, इट मस्ट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग जिटर्स कि ऐसा कुछ हो सकता है. उसको लेके पहले से ही प्रेशर में था वहां का. प्लस उनका फेड का कमेंट्री भी बहुत अच्छा नहीं था इस बार, तो वो भी उस तरीके से रिएक्शन हुआ मार्केट में. सो दीज थिंग्स आर मोस्टली वेल नोन इन द एंटायर फाइनेंशियल सर्कल कि ये डेट पर है, इतना डेट है, इतना ये करना होता है. कोई नया चीज नहीं था. दिस इज जस्ट अ वे टू create some news in the market. Now coming back to our market, like you rightfully pointed out, we have a bullish harami in the Nifty daily, that also after a correction. So it's a good signal. It needs to have a follow through, which it will, the way it bounce back, there's a good chance of that happening. Now let's try to assess first let's assess the downside, because जिस तरीके से 14-15 सितंबर से मार्केट गिरा है, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन आल्सो कि there was no relief in the fall, right? We didn't have any relief. We had a continuous fall. यहाँ थोड़ा सा आप बोल सकते हो थोड़ा सा रिकवरी दिया, बट कुछ ज्यादा नहीं किया वहां से. और अगर मैं एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से, राइट, ऐसा कुछ. सो वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ रहा हूं मैं. ओके, वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर द टाइम बिंग जो लग रहा है कि अगर समझो कोई ग्लोबल क्यू हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसको लेके नीचे जाता है. एंड प्लस ऑन 6th वी हैव द आरबीआई पॉलिसी विच विल स्ट्रेच इनटू द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी, बट इम्पैक्ट मार्केट में पहले से ही शुरू हो जाता है उसका. नाउ इफ वी आर लुकिंग एट द कंटिन्यूएशन ऑफ अ टिप काइंड ऑफ हैपनिंग, तब ये लेवल ऑफ 19,575 बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर 575. ओके, ये अगर इतना आता है, इसको टेस्ट करता है, अगर डिप आता है और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, और इस बार ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा. और दूसरा है 575 अगर नहीं रुकेगा तो it might push its way down all the way to 475, 400, वैसा कुछ, which I will just come back to the daily Ichimoku and try to show you. Yeah, which is here, somewhere here, 475, और फिर थोड़ा और नीचे है इधर 400 पर. सो हमको दोनों साइड लेवल देखना है. गुड साइन इज कि कल इचिमोको का बेसलाइन ठीक से निकाला, रीटेस्ट किया लास्ट आवर में जाके. अब देखते हैं आगे. नाउ अपसाइड में कहाँ ब्लॉकेज आ रहा है? 700 पर एक ब्लॉकेज है, 775 पर दूसरा है, दिस स्विंग लोअर हाई. इसके ऊपर निकलता है तो ये गैप एरिया कवर करने का कोशिश करेगा. नाउ बिकॉज एक ट्रंकेटेड वीक है, वी हैव मंडे गांधी जयंती हॉलीडे, तो जस्ट 3 days ऑफ दिस वीकली एक्सपायरी, तो आई एम नॉट
going to take a chance with this weekly, for a direction. Reason being कि इतना वॉलेटाइल है ना, अप डाउन मार रहा है, आपके टारगेट के तरफ भी स्टॉक जा सकते हैं, इंडेक्स जा सकता है, बट नॉट नेसेसरी सीधा गया, वो अप डाउन मारते जाएगा और हर पुल बैक में आपका ऑप्शन का मेल्टिंग रैपिड स्पीड में हो रहा है. तो आई डोंट वांट टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इन दिस वीक. व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू इज अ कैलेंडर spread this week. Okay. So my calendar spread is I'll be looking at the 19700 of 12th October. Okay. I get more time in my hand for that kind of a move. And I will be going double short on 19800 of this particular week ending on Thursday. It is a delta neutral strategy. The delta of 12th October 19700 is equal to the 2x delta of 19800 of this week. I am protected I have a break even from 19625 to 19825. 825 is where we have the gap out here. So I am quite on the upside. Above 825, of course, I will have to say bye-bye to this trade or do some adjustments at that time. But I'm looking at it like that कि मुझे उतना टाइम इन हैंड है, और थर्सडे को जब ये खत्म हो जाएगा और फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी है, उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट वीक का जो एडजस्टमेंट करना है करूंगा. इस समय आई विल नॉट डू अ पुट शॉर्ट, इवन दो अच्छा बाउंस मिला, बट नहीं करना है मेरे को, बिकॉज जब तक वो ये ट्रेंड लाइन और ये 700 के नीचे है, मैं थोड़ा सा आई वांट टू प्ले इट लाइक दैट, आराम से इसको उस साइड में लेके चलना चाहता हूँ. हाँ, अगर 700 के ऊपर सस्टेन होने लग जाता है, से ऑन ट्यूसडे इटसेल्फ, ओके, 700 775 टू बी मोर सेफर, अगर उसके ऊपर 30 मिनट्स भी निकाल देगा तो मैं फिर पुट राइटिंग में आ जाऊंगा. आई माइट सेल अ 19600 650 और 700 पुट ऑल्सो, जस्ट टू रिड्यूस माई इम्पैक्ट ऑफ दिस डबल शॉट इन दिस केस, बिकॉज वो वैसे वैसे मेरा कॉस्टिंग और अपसाइड का ब्रेक इवन पॉइंट खोल देगा इन द निफ्टी. दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट निफ्टी फॉर this week. With that, the second factor is Friday RBI policy है. We might not see a super good. हो जाए तो बहुत बढ़िया है, but वो मैं थोड़ा factor mind में रख के चलना. Yeah, Gaurav. That's my Nifty strategy. Okay. Perfect. So basically, you are bullish in the market going ahead. That is why a calendar spread where next week's delta plus delta and this week's negative delta you're playing. Basically. Yeah, neutral करके उसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ. I don't want to go overboard on the delta also. If I do a 1:3 or I short a closer delta, then I might get very badly hit. Yeah. I don't want to do that risk. So I don't want to try to the put writing part. I will look at it based on the action on Tuesday. अभी से उसको मैं preempt नहीं करना चाहता इस stage में, right? Okay. So similarly, coming to Bank Nifty. Harabi. No. इसका upper wick ऊपर निकल गया. Yeah. So इसका एक खाली spinning white candle है ये, और but उससे important है ये वाला जो candle बना था on 27 and on 28 जब निफ्टी ने न्यू लो मारा, बैंक निफ्टी ने नहीं मारा, and you can see how well it is respecting this trend line. Okay, one of the weakest sector indexes, Bank Nifty, compared to everything else, is shown some kind of leadership qualities again, कि हम हैं संभालने के लिए इस मार्केट को. प्लस इफ यू सी द बिगर पिक्चर, बड़ा सा ट्रायंगल का अर्ली स्टेज जैसा लग रहा है मुझे फिलहाल. फ्रॉम अ couple of weeks point of view, this could do something like this, go here, again come and again try to go up like this. That would be a mildly bullish bearish scenario. Immediate short term correction, supposing global cues next week या RBI policy खराब आ जाता है या कुछ negative reaction करता है मार्केट, तो इसको ब्रीच कर देगा तो सीधा इधर आ जाता है 43,800 to 43,000, right? That means वो correction में it would be worth entering aggressive long, because that would suggest that कि ये एक करेक्शन कंप्लीट हो गया, इतना बड़ा आप मूव का,
इतने बड़े अप मूव का, उस हिसाब से। सो थोड़ा पेन, मोर गेन, या तो कंटिन्यूस साइडवेज टाइम वेज करेक्शन हो सकता है full month of October. That's how I'm looking at it right now. So here also, but because they have tried to be the leader in the turnaround. Okay, they've tried. Of course, pharma is the definite leader right now, but they have also tried. See, यहाँ पर support, यहाँ पर फिर से support करके full control में है वो लोग का कि हम इसको संभाल लेंगे। तो इधर भी 44,200 में थोड़ा सा और नीचे पकड़ूंगा फ्रॉम 44,400, थोड़ा 44,200 जब तक है, दिस इज गोइंग टू अटेंड up, like again try to regain the glory of a bank nifty. Here you can see trend line अभी तक breach नहीं कर पा रहा है यहाँ का, so trend line breach चाहिए to see decent amount of short covering in it. So here also again, because इसकी expiry अब Wednesday को है, तो just 2 days in hand, आप क्या करोगे इसमें 2 दिन में, और प्लस फ्राइडे आरबीआई पॉलिसी, तो वापस वही केस हो जाता है ऑफ लाइक कि इसको हम कैसे संभाले। तो यहाँ पर भी कैलेंडर स्प्रेड सेम वे डेल्टा न्यूट्रल करके किया है मैंने, 44,800 ऑफ 11th October. I need bigger, I need more time to manage the reaction of the RBI policy. और ये वेडनेसडे का 45,000 का डबल कॉल शॉर्ट किया मैंने। इसमें मेरा ब्रेक इवन आपका थोड़ा सा 47 व्हाट यू कॉल, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं है, 45,100 के पास है इसका ब्रेक इवन, 45,100, and we come here, there is a baseline resistance there also. So with 2 days, I'm going to work on that aspect. And yes, like I said, अगर मुझे ट्यूसडे को इधर भी स्ट्रेंथ दिखा मार्केट में, तो मैं पुट राइटिंग तब चालू करूंगा, उसके पहले बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग नहीं करूंगा, कीपिंग इन माइंड that it has been one of the weakest sectors so far. Number 2, RBI policy in mind. Yeah, Gaurav. Yeah. Perfect. So sorry, मैं usually end में करता हूँ ये. Just a few people saying कि GIFT Nifty 90 point gap down दिखा रहे हैं. But to be very honest, Friday morning when we saw GIFT Nifty was showing 19,650 का level, if I'm not wrong. Yeah. Yeah. And we closed at 530, 530, 532 on Thursday. Yeah. Yeah. I think even if there is a gap down, Monday छुट्टी है, मतलब Monday हमारे यहाँ छुट्टी है, GIFT is open, Dow is open. So it can either be Friday weakness. We cannot say कि Tuesday we'll definitely see a gap down. Depends on Monday what happens. So people who are seeing it panicking around 90 points in GIFT Nifty, understand 90 points is not even 0.5% for Nifty these days. Yeah. And that is very, very minuscule. Right. And also, Gaurav, the fact this let's give it a, even if you give it a benefit of doubt. Yes. Yeah. So that's why we are not going to do a put short, no? Yeah. Unnecessarily. Or 576, 90 points GIFT Nifty down is equivalent to around 550, 60 in the spot. Exactly. So that's the important level we have in mind. Na? So we look at it from that angle. Absolutely. Put writing तो हम तभी करेंगे जब हमें एक follow through आ जाएगा. Absolutely. So that way we are protected. Na? We are not taking a higher risk in the entire move like that. Yeah. Plus, 2 years, we have been negative for every Thursday expiry since past 1 month, and that has been the view which has played really well. So we don't have any positive bias, but we do not want to preempt anything. That is what I'm trying to say. Never try to preempt the market. Let the market show us the direction, then let's follow it, rather than thinking about what may happen on Tuesday. So that's one thing I'll say. That's one thing I've seen from my trading experience over the years, and Dinesh sir will also say the same thing. Never preempt the market, never assume anything, and especially GIFT Nifty or SGX Nifty, because SGX weekend GIFT Nifty पर भरोसा नहीं करना चाहिए, weekend मोड ही होता है. Exactly. SGX हमेशा बेवफा रहा है और रहेगा, ये चीज याद रखना आप लोग. एकदम. Yeah. So going forward, Sita और Geeta, GIFT Nifty एकदम same scenario. Triangle, Fin Nifty triangle है. It will also, or Tuesday's expiry hai. So this is going to be the catch, that's one of the reasons कि going with the calendar is because अगर इसका Tuesday expiry है,
तो अगर ये फिर म्यूटेट कर दिया, जैसे लास्ट ट्यूसडे म्यूटेट था इसका एक्सपायरी पूरा, तो फिर आप क्या करोगे? आपका तो बैंक निफ्टी का हैवी मेल्टिंग हो जाएगा इस वीक का कॉल पुट का। तो इसीलिए वॉच एंड वेट है ये पूरा, उसके कारण पूरा। सो ये भी वही है, इफ इट स्टार्ट्स, दिस वन स्टार्ट्स मूविंग अप, we have 19875 and that gap area at 20,050, like that. Or downward break is only below 19,600, then it's a pretty steep fall till 19,300 odd out here. Again, they are trying to do, they are like twins. They will move together और अपना उस हिसाब से आगे का मूड है. So the only dilemma for financial stocks, whether it is banking or NBFC, is कि are we getting into a time-wise corrective or we are coming to the end of a correction and then the upside begins. So you have to wait and watch both of them right now. Yeah. So coming to mid-cap select, I've been saying this for the last couple of weeks कि ये bearish harmonic pattern reversal हुआ है इसमें, वो अभी तक negate भी नहीं हुआ है pattern. Okay, it's still stuck in this no man zone completely. यहाँ पर, और इसमें एक interesting point है जो मैं derivative data रोज रात को participants का देखता हूँ. लास्ट ये वीक में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन में एफआईआई ने भयानक फ्यूचर शॉर्ट्स किया था. इस फ्राइडे का डेटा मैंने देखा नहीं है, बट जो लास्ट 3 दिन का डेटा मैंने देखा, अराउंड 1500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स है उनके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. सो जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, एफआईआई का इतना प्रेजेंस नहीं होता था. ऑल दिस वे रैली अप इस इंडेक्स पर एफआईआई का नेक्स्ट टू माना 1-2 कॉन्ट्रैक्ट मिलता था हमें फ्यूचर में उनका. ऑल ऑफ अ सडन ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम देयर साइड out here. So it's a word of caution. The pattern would get negated in my view above, this time above 9,225. I won't wait for above 925 के ऊपर ये pattern negated हो जाएगा, and then this can continue to be a big rally movement. However, if it breaches this level of 8,975, then this particular index and its heavyweights could be in for a lot of correction coming up. तो यहाँ थोड़ा सा caution है इस इंडेक्स पर इस समय, बिकॉज रैंक आउट परफॉर्मर रहा है. सो कीप दीज 2 लेवल्स इन माइंड इसमें एकदम. और इसकी फ्राइडे को ही हो गई वीकली एक्सपायरी, मंडे हॉलीडे, तो ट्यूसडे न्यू एक्सपायरी 9,200 एंड थोड़ा सा नीचे 8,950 का स्ट्रैंगल इज समथिंग विच आई विल बी लुकिंग एट ट्यूसडे, प्रोवाइडेड the market is not in a bearish mode. If it is on a bearish mode, I will not look at put writing at all in this case. Yeah, Gaurav. Yeah. You're muted. Gaurav, you're muted. So there's a doubt regarding your bank nifty strategy. So can you just explain it once again? Whether to sell, because 2 dates, and we're doing a calendar there as well. So they're just confused. There you go. Yeah. 11th so October. Rajkumar Gupta sir, this one's for you. You had just put this out. So yeah. This has a delta of 45 or 48 का delta है, और this has a delta of 17 into 2, 34. थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव है, बिकॉज इसके ऊपर फिर प्रीमियम बहुत लो हो जाता है इसका. सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. इसमें पूरा डेल्टा न्यूट्रल किया, जितना क्लोज 45,150 तक प्रोटेक्शन है, 45,150 इसमें. एंड वेयर आर वी इन बैंक निफ्टी राइट नाउ? सो लाइक आई सेड ना, अगर अपवर्ड मूवमेंट होगा तो मैं पुट में राइटिंग में आ जाऊंगा. अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो फिर उसको संभालूंगा और फिर नेक्स्ट वीक का उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा आके इस गेम को. या got it? Yeah. So now let's go to the stocks. I'm starting with Aarti Industries. Aarti Industry is a bullish harmonic reversal. Okay. A bullish harmonic reversal which took place in July. Breakout, turnaround, pullback. Let's go to the daily. Gap up almost got filled. So keeping this gap up high in mind, 484, so $2 below that, 482.
I am looking at higher levels out here. So if I just turn it into a line chart, okay, you can see that first reaction यहाँ हुआ, second reaction यहाँ हो रहा है, यहाँ पर अच्छा consolidation होके निकला है ऊपर. So I will be looking for this particular retest and this level out here at this trend line. Again, let me go back to candles, come to the weekly. Yeah. So this falling trend line, I'll be looking at this falling trend line out here at 500 and जब जहां मिलता है तो यहां पर मैंने राइट और इचिमोकू का भी सॉलिड बेसलाइन सपोर्ट है ये. तो जब तक ये 482 80 उस लेवल में रहेगा, आई एम looking at this one. So यहाँ पर let's come here because month has just started. 1:1 500 520 कर रहा हूँ, $20. फिर उसको देख के I will roll out or roll up the spread उस हिसाब से. 5 my risk is only 6 in this. A reward could be 14 for me in this. Very low margin requirement out here. So even though I'm first looking towards 500 and what do you call 30 odd out here, but 530 का call premium बहुत low है और वो फिर वर्थ इट नहीं होगा. उससे अच्छा तो मैं नेकेड 500 कॉल को लेके आगे बढ़ सकता हूँ. आई डोंट नीड टू डू दैट. द अदर फैक्टर इज कि अगर ये 505 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है से 2 आवरली कैंडल, तब I might double up my buy side or I might then remove the 520 call strike as a hedge which I have, because that would mean a clear break area for me here इसके ऊपर for a up move here like that. So I will adjust it based on the need, but I will start with a max cap of my risk. I will not go in with a strategy कि खाली naked call buy कर लूं या वैसा नहीं, because we are right now in a short term correction zone. तो protected trade ही आगे बढ़ना better safe रहता है इधर. So that's the first one, Gaurav. The other one is Maruti. Maruti is a bullish flag formation happening out here. See, first leg, second leg, third leg, fourth leg, fifth leg down. So I am looking for a Maruti move out of this thing out here and in this zone. The other factor of Maruti is that Maruti had a weekly bearish harmonic which had formed here at 10,600, which did a very minor decline and took off. So the bearish harmonic pattern got failed. So now, because it failed, there is the probability of larger short covering or a fresh long derivative point of view in the stock. So I will be looking at it. Plus the flag pattern is very clear. So here also I am going again because breakout is above 10,700 and I am entering at 10,600. Anything below 400 and 400 मतलब पैटर्न फेल हो जाएगा. फिर ये कभी कभी फ्लैग डिक्लाइन ट्रैप करने के लिए भी होता है. तो इसीलिए अगेन मैं इसको नेकेड लॉन्ग कॉल नहीं करूंगा. We'll keep it a 1:1 spread, 10,700, 11,100 का, because 11,000 है the flag target. तो 11,000 कर सकता था इसको, but yes, मेरा कॉस्टिंग काफी कम हो जाता उसमें. पर फॉर अ स्टॉक लाइक मारुति मेरे को थोड़ा सा और मूड हुआ इसको बड़ा रखने का, इसलिए 700 11,100 का सी प्लेन स्प्रेड बनाया. अगेन इन बोथ केसेस मारुति एंड आरती, आई विल नॉट बी लुकिंग राइट नाउ टू शॉर्ट पुट्स. अर्ली ऑफ द एक्सपायरी है, नहीं करना है. आराम से अगर 700 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है ये, तो यस आई वुड बी टेम्पटेड टू शॉर्ट अ पुट इन मारुति. तब तक नहीं करूंगा इसमें ऐसा कुछ भी काम. Similarly, in Aarti, either I will, in Aarti's case, I will not short a put. I would rather look to get out of the 520 call. The reason is Aarti is not as big a liquid option stock like Maruti. So when you select a stock to write options, please look at liquidity, look at the OI,
एंड तब करिए, ब्लाइंडली मत करिए, नहीं तो बाय चांस आपने कर दिया और गॉड फॉरबिड स्टॉक ने रिवर्स मार दिया, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा, बहुत जबरदस्त प्रीमियम लॉस कर देगा आपको। या गौरव, सॉरी टू डिस्टर्ब। Someone was asking to repeat the Aarti strategy. Yeah, one minute, one. 500, 520, 1:1। उसपे मैं 1:2 नहीं करूंगा, पुट राइटिंग नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा इसमें। अगर ओके, लेट्स जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं पुट राइटिंग आरती जैसे स्टॉक में क्यों नहीं करूंगा। इवन इफ इट गोज अबव 505 इज द फैक्टर ऑफ लिक्विडिटी मिसिंग इन द स्टॉक। इट्स नॉट दैट हैवी अ लिक्विड स्टॉक। आप इधर भी देखो 530 में है लिक्विडिटी, नो डाउट। कंपेयर 420 520 में ज्यादा है, 530 में कम है। प्रीमियम ₹1.5 का फर्क हो रहा है। मैं ₹1.5 के लिए वो गड़बड़ नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड रादर प्ले इट सेफ एंड उसका जरूरत पड़ेगा तो वो उस समय निकल जाऊंगा और करूंगा, बट ये नहीं करूंगा। इफ इट गोज रॉन्ग गड़बड़ हो जाएगा मेरा। सिमिलरली मारुति में कर सकता हूँ, वंस इट गिव्स मी अ प्रॉपर move, because you look at the liquidity difference in both the stocks. Just a second. Yeah, look at the बहुत डिफरेंस है। अरे मारुति इज अ लिक्विड ऑप्शन स्टॉक। आपका ओआई बढ़ता जाएगा इसमें, जैसे जैसे स्टॉक चलेगा ना, यू विल गेट अ वेरी डिसेंट ओआई बिल्डअप एंड एग्जिट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हेन यू गो रॉन्ग यू गेट एन एग्जिट इन दैट। या गौरव, that's these are the two stocks I'll be looking at this week. Yeah. Absolutely. All one more thing before anybody. This is just a pure educational video. This is not a buying tip. If you want to trade, if you're taking trades based on these views, please, it is up to you. It is your decision. Please consult your own financial advisor or use your own. What do you call? Use your own analysis. Yeah, logic as well. And So please these are manage just your risk. Yeah, risk ठीक से manage करिए और don't have to do a copy paste of anything. And risk absolutely. is an individual story. किसी Yeah. का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, और जो भी करें आप, जैसे भी करें, स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करिए। Yeah. उसके बिना कभी काम नहीं करना। Yeah, because this is not a tip. The tips, the recommendation, the trade recommendation comes on Thursday with our derivative head, Mr. Rajdeepak Singh. There you can trade on our view. This is just a build up to next week, so that is what we are trying to help you guys with. So, sir, I'll take few questions. Yeah. Once we take I'll take some questions for 10 minutes because today I have to. It's a long weekend. Even I'm on a holiday, so so we'll do the same thing, that we will take everybody's question in the chat. We have time till Monday to reply. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So someone is asking, holding SBI 595 call at 16. Okay. First, let's see SBI out here. See, SBI looking quite good. I can see a bearish harmonic probability. Preempt नहीं करूंगा इसको, जस्ट इस 615 पर एक रेजिस्टेंस है उसका, उतना बोल सकता हूं इस समय। उसके पहले एक इधर है 601 पर, बट अगेन यू हैव अ आरबीआई पॉलिसी ऑन फ्राइडे। ओके, एंड ऑफ लेट एसबीआई इज द वन अमंग द बैंकिंग स्टॉक्स जो बहुत कोशिश कर रहा है नीचे नहीं गिरे, कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन अदर स्टॉक्स। सो यस, इसमें ट्रायंगल जैसा भी फॉर्मेशन है, 1 2 3 4, yeah. So above this, above this line 602, hourly above 602, you very likely to see the 615 where it might pause. Not necessary it will pause. That's the next obstruction for it out there. So I would go with that view right now. Yeah. India Cements 260. Oh, okay. India Cements 260 call, sir. And so I'm holding HDFC Bank 1520 put and sold 2x at. Oh.
Naresh sir, can you just elaborate on which put you have? What all puts have you sold and what exactly is the thing? Until then, sir, let's take India Cements 260C. So, okay, trying to push its way up. 3.3 looks like a kind of a resistance to me. Sustaining above 3.3, it pushes its way up towards lot above, all the way to 4.15. वहां resistance दिख रहा है फिर मुझे 4.15 and then a big one towards 5.5. But 3.3 looks like a kind of a wall right now. Anything below 2.3 will not be good. 2.45 will make it tough. 2.35 ऐसे उसके नीचे टफ हो जाएगा इसके लिए रिकवरी करना. Yeah. Yeah. Sir, someone has told HDFC 1520 put. View on that. Okay. HDFC 1520. Put. Double quantity says. The narrator says double quantity. Let me see. This narrator has replied. So viewers, one thing very clear. It's Dinesh sir and even Rajbhai has been saying that HDFC mein there is no clarity right now. So trading in HDFC one should avoid. It's at a, you can say it, the Friday Thursday low was like a support for it. इसमें कोई doubt नहीं है. But turnaround हुआ है कि नहीं? See 25 के ऊपर ये जो put है ये strong हो जाता है. 25 के ऊपर clear movement आ जाएगा all the way till 28, maybe a lot more than 25. Weakness. Okay, he's holding, sir. He's holding 1520 put, and he has sold some put at 3.5. So I don't. Which put? Like, no idea. And he has sold 2x. So basically, it's 1:2 bear put ratio paired. See, major support is at 1470 now. Okay, 1470. Again, RBI policy. We can't. देखो ये double. Will you call this a double bottom in the daily, Gaurav? See this? यहाँ जाके. So इसके नीचे ही कोई पैनिक है. इसके नीचे. Okay, इसके नीचे वो 1470 जाएगा. और अगर हम अपवर्ड की बात करें तो sideways. Short covering could come into the play out here above 1540. Above 1540 short covering में आ जाएगा. Stop. Yeah, 1540. Yeah. कितना बड़ा sideways pattern है ये वाला. Now too early to say ये breakdown है कि यहाँ पे too early to say right now. Yeah. Okay. So he has sold 14702x. So basically, that's the huge support line. Yeah. But we are just okay. You are 1520 long and 14702x. See, again, I've said it in the past also that early into a settlement, you should not be doing 1:2 because the decay factor of that strike is going to be very, very slow initially. Unless there is a massive reversal, upside निकल गया तो होगा, नहीं तो वो एकदम टॉर्टाइस की तरह क्रॉल करने वाला है अभी वो अपना तरफ में. तो अगर सपोजिंग आपका कोई खराब न्यूज आया और वो एक शॉट में 1470 जाता है, ओके, से आरबीआई पॉलिसी के दिन या नेक्स्ट मंडे को जब मार्केट खुलता है तो आपका उसका प्रीमियम पागल की तरह लीप मारेगा, उसका IV आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. सो अर्ली पार्ट ऑफ अ सेटलमेंट प्लीज ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम 1:2. Absolutely. Yeah. Vedanta for next 1 year. Selen Naik sir, I think Vedanta had some S&P. Yeah, कल न्यूज आया ना कि एक के अगेंस्ट 5 स्टॉक मिलेंगे उसमें. Yeah, so let's wait there. Yeah. Let's wait because there's a lot of news there, and they have degraded Vedanta Resource PLC, I think the UK based listed company. So. Okay, PSU Bank next month. Selin sir, our research head, Mr. Pankaj Pandey, has anyway spoken about PSU banks last time, and we also have a PSU bucket. You can have a look there. Hedge strategy. Kiran sir, I'm not able to understand what is
hedge strategy for options, with a lot of options, a lot of hedge strategies that can come. Hi, Ganpati sir. Asian Paint CE buy. Sir, which CE buy have you bought? We need to know that. If I added shorts to showing, yes, Emil sir. If you see the outstanding futures OI, yes, the shorts have been added. But if you see the options strategy, there is a 1.24 lakh quantity put short and 57,000 quantity call short. So if you see the call and put parity, there are 2.5 put short compared to one call short. So it's sort of a mixed data. So we'll need to see more 2 3 days to get an idea where the FIs are taking us. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Someone asking view on Axis Bank. Yeah. One second, sir. Sharma Vlogs, Kota Bank, please. Yeah, please, because there are few people who unnecessarily naming this bank with some idiotic names. Let's avoid it. It's a very respected bank. Kotak Mahindra Bank is a respected. It's the fourth largest private bank of India. So let's. I'm sorry. I thought you were saying something else in that way. Yes, sir. Okay. So Axis Bank, very small time frame, hourly. Okay. If we start seeing a hourly candle close above 1038, ये जो विक है, इसको कभी उसके ऊपर बंद नहीं कर पाया है. इसके ऊपर होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम्स एट 1053, which is the 1.27x of the full rally from 6 September. वहां में एक छोटा सा बेरिश लोअर टाइम फ्रेम बेरिश हार्मोनिक है उधर, उसको पार करता है तो बहुत लंबा रैली है इसमें. Till it's above 1030, it has the potential between 1030 to 38. कुछ नहीं करेगा ये, उसके ऊपर या नीचे ही कोई धमाल दिखाएगा ये स्टॉक. Okay. Sir, Ganpati sir is asking about Asian Paints. So, Yeah. is it bullish or bearish? If it's bullish, so I think if it's bearish, if you ask about C, it is always ATMC or ITMC. Someone should buy, not OTMC. So, is it bullish? Doesn't looks like a flag and pole bearish flag. Yeah, थोड़ा सा breakdown हो गया है उसमें. The if I mark this line out here for myself, 3,150. A daily close below this, daily, not hourly. Daily close below this might push it down towards this level of 3,050, 55. उसके पहले नहीं, because hourly में अगर चलते हैं तो yes. I marked a resistance also out here around 3,200 to 3,225. I would be looking at strategy in this only on a pullback, then review it कि और गिरेगा क्या, कि इसके ऊपर re-entry ले सकते हैं for big upper move, because इसका अगर हम bigger picture देखेंगे ना, तो it's like a massive triangle. 1, 2, 3, 4, last leg of a triangle hai. So 3,050, look at the massive weekly support out there. 3,050, 60 at a weekly support also. So immediate short term, I would ignore it completely. Yeah. Totally. Yeah. Yep. MTNL we not covering Shekhar Shah sir, because MTNL is not an FNO stock. View on LIC Housing Finance. Yeah. This stock was in uptrend, massive uptrend. Massive uptrend, but इसमें it did come to my because we had ICICI Research had a momentum pick here and it was fantastic. So I had marked it out here, इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया इसमें. It is at a bearish harmonic काट. Okay, reversal confirmation missing है. That is only below 400 because weekly है, right? You remember weekly है, so we need to see a daily breakdown. 450 के नीचे daily breakdown हो जाता है इसमें, तो तब तक ठीक है ये मेरे हिसाब से. ये but again pattern को negate करने के लिए it has to move a bit more up. I will like to see it trade much more higher, say towards 490. Tab I would be re-interested in the stock. In between, मेरे लिए no trade zone. Okay. Yeah. Fair enough. Sir, view on Lupin.
Pharma companies Pharma have had a been ball in, yesterday. yeah. कल तो पगला गया था सब फार्मा स्टॉक्स एकदम एक के बाद एक. So you can see, look at the monthly. It's penetrating above this 11. Weekly. Yeah, Sir, sorry, weekly. Yeah, 1170 के ऊपर और ट्रैक्शन आ जाएगा इसमें. इधर में देखिए, then it will try to hit the all time high. काफी strong stock है. Yeah, look at the consolidation. Sideways है पूरा and breakout हो रहा है यहाँ पर. So ट्रेल बहुत डीप है. 1145 1145 का यहाँ से मूव आया है. सो एनी पुल बैक से टुवर्ड्स 1160 would be 55 would be an interesting attempt to look at a lower risk entry in it. अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेल कर रहे हैं and but I would not like to go bearish on this. 1145 वैसा लेवल लग रहा है मेजर सपोर्ट. Okay. Yeah. Okay. Yeah, sir. So that was the last question. I'll take your leave because I have something. Okay, so viewers, thank you. If we have not covered your questions, you guys can please put it in the comment section. Dinesh sir comes back, he replies to every query that is posted in the comment section. So once the video ends, you can come back to this video, post your comments in the comment section. We will come back, reply. If sir doesn't reply, I'll make sure he replies. And if he doesn't reply, you can catch hold of him on Thursday because he's there live with us. So आप sir का कान खींच सकते हो उस दिन. ठीक है? So see you guys. Thank you so much. Enjoy the extended weekend. See you guys. Hopefully you have a great Tuesday start till Thursday, and we'll catch you on Thursday. Thank you so much, Dinesh sir, for being with us. Thank you everyone, and have a great weekend, everyone. Bye bye. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.